Good morning students. I am your science teacher Swati. Today we will discuss the chapter sorting materials into groups. So इस chapter में जो आज का topic है that is the conduction of heat and electricity. So first we will study the conduction of heat. So let's study about the conduction of heat. See what is written here in this paragraph, that have you noticed that cooking pans in the kitchen, they are made up of metals but their handles are made up of wood or plastic. अब कह रहे हैं कि जो कुकिंग पैन्स आप किचन में यूज़ करते हैं बेसिकली दैट पैन्स आर मेड अप ऑफ basically the handles of that pans, fine, and the pans are made up of metals but their handles are made up of wood or the hard plastic. Why they are made up of hard plastic, why the handles are made up of wood or the hard plastic? The reason is that this is because metals get heated while cooking but their wooden or plastic handles do not. जो मेटल हैं वो हीट हो जाते हैं कुकिंग के टाइम पे बट वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स हीट नहीं होते. सो यू कैन ईजिली हैंडल देम. सो दैट इज़ वाई दैट प्लास्टिक हैंडल्स और द वुड हैंडल्स मेकिंग इट ईजियर टू हैंडल देम. सो यू कैन हैंडल द यूटेंसिल, यू कैन हैंडल द कुकिंग यूटेंसिल better. Fine. That is why the cooking utensil is made up of metal but its handle made up of wood and the plastic. So what do you understand from this topic is that, see, it means the plastic and wood, we are using it as a handle, so it means they do not conduct heat. Fine, they do not conduct heat or they do not allow the heat to pass through them. That is why they do not get heated up, they do not get heat up easily. But the metals, if you heat the utensil which is made up of metal, it just get heated up fastly, but the handle which is made up of wood and the basically plastic or wood, the handle will not get heat up easily. Why? Because they are the bad conductor of heat. Fine, bad conductor of heat means the plastic or wood will not allow heat to pass through it. Fine. So the next in the next line it is written that materials that allow heat to pass through them, they are called the good conductors of heat, and materials that do not allow heat to flow through them are called bad conductors or insulators of heat. So most metals are good conductors of heat, but plastic, wood, cloth, paper, glass and air, they are examples of bad conductor or insulators of heat. So वो materials जो अपने अंदर से heat को flow करने दें, that are good conductors like metals, और जो आपके cooking utensils हैं जिस भी चीज़ से बने हैं वो metals हो गए आपके, like iron हो गया, copper हो गया, zinc हो गया, these are the metals, they are the good conductor of heat. But the materials that do not allow heat to pass through them, they are called the insulators or the bad conductors of heat. So materials जो अपने अंदर से heat को flow नहीं होने देते उनको हम क्या बोलते हैं? We call them as an insulator, and examples are basically wood, cloth, paper, glass, air. That are the examples. Fine. So basically अब हम यहाँ पे what we are doing is we are sorting the materials into two groups. One which is a good conductor of heat, other which is a bad conductor of heat. One which is a conductor, second which is an insulator. So insulator is basically a bad conductor of heat. Fine. So suppose some substance, some materials or objects are given to you and उसमें आपको बोला जाए कि separate the things or separate the substance into insulators and the conductors, or the into good conductors of heat and the bad conductors of heat. So what will you do? You will just look at it. You will just look at the material. If there are presence of metal, if some metals are present there, then you will categorize those metals in the group of good conductor of heat or conductors. And secondly, if some plastics are given, plastic materials are there, or glass materials are there, or wood materials are there, paper material or cloth material is there, you will just put those materials or things into the bad conductor group or into the insulator group. Fine. So it means you are now sorting out the materials on the basis of property, which is the conduction of heat. The next is the conduction of electricity. So have you observed that electric wires and a plastic coat and have a plastic coating on metallic wires? कभी आपने ऑब्जर्व किया है जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं या जो केबल्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं घरों में, तारें, वो केबल्स बेसिकली उन तारों में आपकी जो कोटिंग रहती है वो प्लास्टिक की रहती है मेटलिक वायर्स के ऊपर. मेटल की जो वायर्स है लाइक कॉपर की वायर्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं घरों में जो हमारे बिजली बोर्ड में रहती हैं. तो वायर्स जो भी होंगी आपको रेड, ब्लू, ब्लैक कलर की आपको नज़र आती हैं, वो वायर्स बेसिकली उनके ऊपर
क्या है ये प्लास्टिक, जो रेड आपको कलर नज़र आ रहा है, जो ब्लैक नज़र आ रहा है, या जो ब्लू नज़र आ रहा है, या जो येलो नज़र आ रहा है, दैट इज़ द इंसुलेशन. इंसुलेशन मीन्स दैट इज़ द प्लास्टिक कवरिंग. प्लास्टिक कवरिंग क्यों है अब उनके ऊपर? बिकॉज मेटल्स कैन ट्रांसमिट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट प्लास्टिक कोटिंग डू नॉट कंडक्ट और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि मेटल्स तो आपके कंडक्टिविटी करते हैं कंडक्ट, बट प्लास्टिक जो है नहीं करता. सो दैट अगर आप वायर को टच करें तो आपको करंट ना लगे, बिकॉज मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ हीट्स, conductor of electricity, but plastic is not a conductor of electricity. Plastic is a bad conductor of electricity, so you can touch the wire with your hands. That is why plastic covering is over there. Fine. So materials that allow electric current to pass through them, that are called the conductors of electricity, whereas materials that do not allow the electric current to pass through them आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स. सो वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को पास होने ना दें, दे आर नॉन एज द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, metals and graphite, they are the good conductors of electricity, whereas plastic, wood, glass and air, they are the insulators or the bad conductor of electricity. So in figure 5.9 properties mention conduction of heat. Now you can see plastic, आपको यहाँ ब्लैक कलर की प्लास्टिक वायर नज़र आ रही है. दिस इज एन इंसुलेटर एंड यही प्लास्टिक वायर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ वायर्स है, उसमें भी प्लास्टिक कोटिंग है, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू. एंड अगेन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक वायर नज़र आएगी प्लास्टिक की, वायर नज़र आएगी मेटल की. सो ये मेटल में जो वायर आपको नज़र आ रही है, दिस वायर्स बेसिकली, ये वायर्स आपकी दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट प्लास्टिक कवरिंग विच यू कैन सी ओवर हेयर, दिस प्लास्टिक कवरिंग इज एन इंसुलेटर और इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ वी आर सॉर्टिंग आउट द थिंग्स, we are separating the things on the basis of property, that is the conduction of electricity. So the material which allow electricity to pass through them, they are called the conductors of electricity, and material that do not allow the electric current to pass through them are called bad conductors of electricity or insulators. Now I'm reading the did you know that wire and cables, they are covered with plastic coating so that electric current does not flow into our bodies when we accidentally touch the wires that are connected to the source of electric current. फाइन्स. अब ये कह रहा है कि वायर और केबल्स पे क्यों प्लास्टिक कोटिंग होती है. ये इसलिए होती है कि अगर बाय चांस कभी गलती से हम उन तारों को टच कर लें जिनमें करंट रहता है, तो उन तारों को टच करने से हमें करंट ना लगे. फाइन. क्योंकि जो प्लास्टिक कवरिंग है दैट इज़ दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो प्लास्टिक कवरिंग जो है उस करंट को हमारी बॉडी तक फ्लो होने में रोकेगी या प्रिवेंट करेगी. तभी वायर्स के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग रहती है कि गलती से अगर वहाँ टच हो जाए तो हमें करंट ना लगे, तो प्लास्टिक उस करंट को हमारी बॉडी तक पहुँचने नहीं देगा. सो दिस इज़ द चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So I hope you must have understood the chapter sorting materials into groups. So what we are doing in this chapter, we are separating or we are basically placing the things together on the basis of the property. Thank you.